A very good afternoon. Today I'm going to take a session on social work practicum, which is MSW 005, and this is a subject which is of utmost important for all W and BSW, since social work is a subject which deals with theory as well as practicum. So this subject, you cannot do social work without undertaking the theoretical part of this subject, which you apply in the at the grassroots level or at the practicum level. So 005, which is social work practicum, is a subject which is to give you training, or which is to make you understand that what you are expected at the in the diverse organizations you are working. It could be a government setup, it could be organization, or it could be for some kind of social cause or social development. So what are the roles and expectations basically in social work? When we have our induction meeting, we sensitize the students, we make them aware about what social work as a subject is. A brief overview is given about the subject, and an in-depth detailed detailed description is given as to how you have to attend the PCPs, that is the counseling sessions, then how you're supposed to get attached to an organization to undertake. So basically, the overview about social work practicum is that in social work you are expected to have your theory papers, for which you have your counseling sessions in the month of April and May, and in the month of October and November, depending on the July session or the December, and wherein the student gets sensitized or is taught about what social work is. And in that only, the social work student is made aware about the fieldwork aspect or the fieldwork part of it. So the social work student is told that he has to a fieldwork session of by attaching himself to any of the organizations. So a social work student is sensitized to being attached to an organization. So a pre-training session is given during the induction or during the classes. 005 is one of the subject which sensitize or makes the student aware. And when we start social work, when we have our PCP classes, during that, after about 4 classes, since the students are from backgrounds, they try to understand that what. So then the students are made aware and told that before the student gets attached to any of the organization, or the student gets attached to an NGO for doing his fieldwork practicum, he or she is expected to undertake 5 orientation visits. What are orientation visits? Basically going to an organization with a guided supervisor, under guidance with along with the supervisor, a fieldwork supervisor, and in that the whole batch of MSW students, BSW students, everybody goes. 5 organizations are and there is a planned idea of where the organizations are going to be, which are the organizations which are selected, and there is a plan chalked out, and a list is given to the fieldwork as to where the 5 which are selected. And it is a compulsory exercise which every student of social work is supposed to do, whether he is from BSW first year, second year or third year, or MSW first year or second year, or MSWC, that is MSW counseling. And course coordinator, or under the supervision of a the visits are planned, and attendance is taken during these visits. And there are 5 organizations which the whole batch, who, when the date is fixed and they are going for the orientation visits, so they visit
all the organizations, and one by one, and wherein they ask questions, they get sensitized to the organization, they observe, they whatever queries they have, they put forth, and then they after that they are supposed to write about those organization as to what was the learning experience from orientation visits. The basic idea of orientation visits, aware as to what are the different organizations which are working in the field of social work, and what is an organization, what is an NGO, what kinds of problems are there, what. So let me tell you here that every organization has a set of rules, has a mandate which is there, which is listed out, has certain objectives, has a mission, motto, and there are certain expectations from that organization. And when we talk about the nature of the organization means what is the organization working in. It could be a blind school, it could be for the hearing impaired, it could be for the Divyangjan or the disabled. So what is the nature of the organization which you have visited, or which is the nature of the organization which is being. So this is the first part of the fieldwork social work practicum, in which the orientation visits are planned, that those are 5 in number. Then we come to a student getting attached to an organization for 45 days. Been a change in the syllabus, and in the first year the student is expected to get attached to an organization for 45 days as well as for 30 days. So basically the 45 days attachment, which we call the concurrent visits or the internship period in IGNOU, is getting attached to an organization. After visits are conducted, the student has a fair idea as to what is his area of interest. Is he interested in children? Is he interested in the women, in the elderly, in the oncology department, in medical social work, in psychiatry, or to work with families? Whatever is his area of interest, he considers that, and he identifies or he lists out different organizations, and then he gets attached to one organization. So let me point out here that when we talk about getting attached to an organization, it is just simply not just going and getting starting work in an organization. Proper procedure which is followed, and this procedure is for the benefit of the students of distance education, or any other student of regular organizations also, or regular schools of social work also, because when we get to attach to an organization, there has to be a proper way of getting attached to an organization, and it is through paperwork that yes, the organization agrees to take the student of social work to be working as a field work, as a social worker trainee, a social worker trainee, for the period of and whatever the timings of the organization are, he has to work according to that. There are certain rules and regulations which the student is expected to follow when he is getting attached to an organization, and so the proper documentation is done, in which the student gets a letter from IGNOU that yes, he's getting attached to the organization, but yes, we give this much freedom to the student that he can identify the organization whichever one he wants to work in, or in case he doesn't have any idea where he can work, it could be where he's a of work, because in IGNOU we have students from all over, and for their convenience, they can get attached to an organization or NGO, or any institution where he thinks he's comfortable to work. So the institution agrees and gives it their consent that yes, they are willing to take the student. After that, yes, the student can work from this date to this date for a period of 45 days in that organization, and this document, this letter is given to the organization for their records, so that after the completion of the field work, the
the student gets a letter of experience, or gets a letter from the organization that yes, he or she was working in their organization for this much period of time, and the kind of work he or she has been doing in that organization, and what kind of satisfaction level the organization has from the student, and what is their what are where he can improve or whatever. So there is a format, or there is a prepared pre-designed information sheet which the student is expected to fill in the organization, which is given in the social field, in the fieldwork journal, and even the visits, we have a pre-designed listed form which according to which you are supposed to get the information and fill it. And also for the concurrent field work also, the pre-designed format or the structure is there, and the student is expected to follow that. And whenever a student gets attached to a advisor is given to the student, and the student is attached whom under whose supervision the fieldwork student undertakes or her internship. So now, what are the roles and expectations from the student in the social work practicum? We all know that students of social work and social work as a subject, we all know that fieldwork is an interactive learning process in a structured environment, and the social work curriculum does not expect certain learning and teaching goals of the students and supervisors. Now, what is a role of student? The most important role, and also that and also that what is expected out of him in the at the master's level. So in the at the bachelor's level, the basic information about what social work is, and what are the different kinds of organizations, how to understand the fieldwork setup, how to understand the organization, then how to undertake activities, then what are the tasks, what are the expectations from the student in the agency, and what are the expectations of the agency from the student. So all that has to be kept in mind, and there is a need for the student to understand the following in order to have, or in order to undertake his fieldwork in an integrated way. First is, whenever a student goes to an organization, first thing is he has to understand the mission, the services, the population or the community the organization serves, and what is the source of funding. Then second is to find out what discipline and service is the primary focus of the organization. So I always tell my students that whenever you get attached to an organization, don't hurry up, don't just start your fieldwork immediately, that today I did this, today I've done this much is there, I got to learn about the organization, this is the organizational pattern, this is the nature of work, these are the cases handled. So if you're writing everything on day one, I feel you have not understood the organization. How are you jumping the gun? You don't have to start right away. First, you have to understand the organization. First, you have to see what is the organization all about. You have to have a thorough understanding. You have to observe. You have to find out the gaps. You have to find out the organization pattern, the hierarchical structure, the nature of work they are doing, what is the mission, what is the teamwork process in the organization, and what role can you play. So 3 or 4 days have to be to understand the organization thoroughly. Only then can you think about stepping into the organization and starting work. And introductions and all are fine, that yes, first day you introduce yourself, you tell them that why are you there and what is your mission and what do you expect and whatever. But understanding thoroughly the organization is very important to undertake fieldwork if you want to have quality fieldwork, if you want to have a positive output. Because just starting the fieldwork without knowing the organization would take you nowhere. You will then go back to what you had to do in the beginning, so then it will make you really demotivated and it won't help you.
Then comprehending the knowledge, values and the skills needed. So then the third point is that comprehending the knowledge. Comprehending the knowledge means what is the kind of knowledge required or expected out of you to undertake work in the organization. What are the values of social work and the skills needed to work in the organization. Now when I get journals from the students, they write and show it to the fieldwork supervisors, and it is about what is the work done. So we always say that in the beginning, don't start copying the work in your final. First you have to show it in rough, so that you, whatever mistakes are there, you rectify those and then you kind of put it in the fair. So there the gaps are identified. The fieldwork student and the social work, the fieldwork supervisor and the social work student, they have a connect between themselves, and the fieldwork supervisor guides the student as to where are the gaps, what are the gaps. Now comprehending the knowledge. Comprehending the knowledge means understanding the organizations thoroughly, and what knowledge to be applied and where to be applied and how to be applied is very very important. And what skills you can what skills are applicable in which organization. Let me tell you here and point out that every organization does not have the same kind of skills which could be applied. They could be different. Principles in an organization which are applied by the social work students are always different. If we are talking about a community, if we are talking about a group, or we are talking about a case where we work with individuals, so different kinds of principles are applied, and it is specific to the organization. Yes, many of the principles and skills are common, like observation is there for everything, communication is there in every kind of organization, but what type of communication, how to communicate, what is the technical what are the techniques of communicating, what are the skills of communicating, they differ from organization to organization. Then listing out the knowledge and skills expected to be learned in the fieldwork experience. Listing out the knowledge means listing out the knowledge that step by step you prioritize as to what is important, what is the second aspect you need to understand, and what skills are expected to be learned in the fieldwork experience. Every student, I always say that every student who goes to an organization starts excelling with every visit. When you go for the first visit, you might be little apprehensive, you might be little scared. आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ उस ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे करना है, पता नहीं मुझसे काम होगा कि नहीं होगा. सो आपको ये जो डर है, हमेशा आप याद रखना कि जितनी आप विजिट्स करेंगे, जितनी बार आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, जितने लोगों से आप मिलेंगे, आपका उतना ही एक्सपीरियंस अच्छा होगा, आपकी उतनी ही प्रोफिशेंसी होगी, आपकी उतनी ही जो आपका पोटेंशियल है वो बाहर निकलेगा, आपका उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. सो हमेशा याद रखना कि जितना आप जाके केस वर्क प्रैक्टिस करेंगे, ग्रुप सेशंस लेंगे या कम्युनिटी में काम करेंगे, उतना ही आपका एज अ सोशल वर्कर जो है, एज अ सोशल वर्क स्टूडेंट या आफ्टर पासिंग आउट एज अ सोशल वर्कर, उतना ही आपका जो एक्सपर्टाइज है, आपका जो पोटेंशियल है वो बाहर आएगा, उतना ही आप अपनी फील्ड में और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और ज़्यादा एक्सेल करेंगे और आपकी एफिशिएंसी बाहर निकलेगी. देन एक्नॉलेजिंग द स्ट्रेंथ्स पोजेस्ड दैट वुड हेल्प इन दिस एक्सपीरियंस. एक्नॉलेजिंग द स्ट्रेंथ्स मतलब कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रहे हैं, तो जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपने हमेशा देखना है कि आपके अंदर, हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है. सो आपको क्या लगता है कि जो आपकी जो स्ट्रेंथ है, वॉट एवर स्ट्रेंथ यू हैव, इफ़ यू अप्लाई दैट, इट विल हेल्प इन योर गेनिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फील्ड वर्क. Then familiarizing the traditional roles that the students have previously taken up. जो आपके ट्रेडिशनल रोल्स थे, जो आप पहले करते रहे हैं, उनको किस तरह से आप फील्ड वर्क में अप्लाई कर सकते हैं. देन लिस्टिंग आउट द क्वेश्चंस दैट वन वुड लाइक टू आस्क द सुपरवाइजर. हमेशा याद रखना, जो भी आपको व्हेन यू जॉइन एन एजेंसी, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको लगता है कि ये मेरे सवाल हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, या यहाँ पे मेरे गैप्स हैं, या यहाँ पे मैं अड़ रहा हूँ, या मेरे यहाँ पे
मुझे these are my limitations. So always list out, always see that what where and how you can come out of it, or how you can overcome all that. So जब तक आप उसको लिस्ट आउट करके अपने फील्ड वर्क सुपरवाइजर से डिस्कस नहीं करेंगे, तो अगर आपको लगता है कि आप कहीं फर्स्ट स्टेप पे गलती कर रहे हैं और आपने डिस्कस नहीं किया, तो आप उसी को ही दोहराई जाएंगे और आपका फील्ड वर्क वैसे ही चलेगा. लेकिन अगर आपको कहीं पे कुछ गैप है और आप उसको वही क्लियर करके उसको फिल कर देते हैं, सो देन यू गेट कॉन्फिडेंस, यू कैन ओवरकम प्रॉब्लम्स विद लॉट ऑफ ईज. नाउ व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स इन द फील्ड वर्क. इन द इनिशियल फील्ड वर्क जब शुरू होता है, हम बात करते हैं कि जो इनिशियल स्टूडेंट जब जाता है फील्ड वर्क के लिए, द फर्स्ट फील्ड वर्क कंप्राइजेज ऑफ ऑब्जर्वेशन, देन अटेंडिंग ओरिएंटेशन सेशंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो कुछ आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं या वो अगर आपको कुछ बता रहे हैं, सो ओरिएंटिंग योर सेल्फ टू द ऑर्गेनाइजेशन. देन रीडिंग मैनुअल्स आप पढ़िए. उस अगर सपोजिंग कोई स्टूडेंट है, ही और शी इज़ वर्किंग इन अ मेडिकल सेटअप, एक हॉस्पिटल में जाके काम कर रहे हैं, पीडियाट्रिक वार्ड में काम कर रहे हैं, या जेरियाट्रिक वार्ड में काम कर रहे हैं जहाँ एल्डरली की प्रॉब्लम्स हैं, या कोई विमेन रिलेटेड गायनी में काम कर रहे हैं कोई, तो सोशल वर्क स्टूडेंट को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पीडियाट्रिक वार्ड में व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड. चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है? चाइल्ड की डेफिनेशन इज़ बिलो व्हाट एज. देन उसके बाद किस टाइप के नेचर ऑफ ट्रीटमेंट इज़ गिवन इन दैट पीडियाट्रिक वार्ड, क्या क्या स्पेशलाइजेशन है. एक एस्थमा स्पेशलिस्ट होता है, एक ऑनकोलॉजी स्पेशलिस्ट है जो कैंसर के लिए बच्चों को जिनको कैंसर होता है, ल्यूकीमिया होता है, उसके साथ डील करते हैं. देन देर आर डिफरेंट एलर्जी के लिए, देन डिफरेंट डेफिशिएंसीज के लिए. सो पीडियाट्रिक्स एक सब्जेक्ट है, एक स्पेशलाइजेशन है, लेकिन उसके अंडर भी डिफरेंट सब स्पेशलाइजेशंस हैं जिसमें हमारा स्टूडेंट अटैच हो सकते हैं. तो उसको स्टूडेंट को इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट विल हेल्प द स्टूडेंट अगर वो स्टूडेंट उसके बारे में पढ़े कि पीडियाट्रिक्स है क्या, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्पेशलाइज्ड जो सब्जेक्ट में क्या क्या इंटरवेंशन दी जा सकती है. सो द स्टूडेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड लर्न दैट. देन अगर वो रीडिंग मैनुअल से पढ़ेंगे, अगर उनको उनकी उस स्टूडेंट की स्पेशलाइजेशन जेनरिक है और कोई मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क नहीं किया है, तो द स्टूडेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड रीड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. आई एम नॉट सेइंग अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क डज नॉट नीड टू रीड, बट उसने अपने मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क में ये सब ऑलरेडी पढ़ा होता है, उसको पता होता है कि डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस क्या हैं, different roles of social workers in different organization pertaining to medicine, pertaining to psychiatry. तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है. लेकिन जो जेनरिक सोशल वर्क के स्टूडेंट होते हैं, उनको एक जनरल सब्जेक्ट की नॉलेज दी जाती है, तो उनको दे नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न about if they are going in a specialized kind of field about it. But here I would say that every student needs to learn about that organization wherever he or she goes, but it's always good to brush up and understand and recap of whatever knowledge you have, so that you revise your content in the mind and you refresh yourself and then go to the organization. Then जो ये पैसिव लर्निंग है जिसकी हम बात करते हैं, रीडिंग एंड ऑल, सच पैसिव लर्निंग वुड प्रोग्रेस इन फैसिलिटेटिंग ग्रुप मीटिंग्स एंड केस वर्क. अगर आप कोई केस वर्क सेशंस ले रहे हैं, अगर सपोजिंग ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट है या इंडिविजुअलाइज्ड केस वर्क आप ले रहे हैं, तो ये आपको ये इट विल हेल्प यू इन अ मोर काइंड ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल वर्किंग विद द क्लाइंट्स. And also in some settings in India there is more than one structure than in others, जैसे कि हम बात करते हैं. And in a hospital a student is expected to undertake rounds, ward rounds लेने होते हैं. Then treatment confidences जो होते हैं, treatment जो उस sessions लेने होते हैं. Then conferences attend करनी होती हैं, group work sessions लेने होते हैं. And student may or may not be allowed to autonomously work and or conduct sessions or plan group work sessions. It has to be under their guidance, under their supervision, because hands-on training तो आपको मिलती है, लेकिन it is not independent. In most of the hospitals or settings, sometimes they don't give you freedom to work independently. So it doesn't matter even if you are working under
an expert in that organization, of that organization, it's okay. Whatever the rules and regulations of that organization are, you have to follow that. And observing experienced social workers when they are performing their roles, you try to observe them, so you'll gain a lot of knowledge from that. Then gaining orientation to special cases to prepare to practice approaches. जो मतलब special cases हैं उनको उनसे आप acquaint होते हैं, उनसे आप orient होते हैं, and then you know which approach to practice and where. Then engaging in collaborative co-facilitation activities. When a social work student is there in a field work or in an organization, he is supposed to collaborate in and co-facilitate and facilitate activities or working in collaboration or coordination with other organization, and planning activities. Then inviting and accepting feedback of the work which he or she has done. Then expecting the organization from time to time. I always say that when you are in an organization, after every 5 visits or 6 visits or maybe 10 visits, you set that benchmark yourself. Try to get the feedback from the organization, try to get the feedback from your supervisor, try to get the feedback by analyzing yourself as to what is the gap, how am I performing, do I need to put in more efforts, do I need to professionalize myself, do I need to apply any kind of skill which I am lacking in, do I need to apply any principle which could be helpful or which could act as a catalyst in working or doing the work. तो आपको ये सब जो है ये जो 4 या 5 विजिट्स के बाद आपने ये देखना है कि आपने कौन सा, कहाँ पे आपकी कमियां हैं, कहाँ पे आपको लगता है कि कुछ इनपुट दी जा सकती है, कोई स्किल अप्लाई किया जा सकता है, कोई प्रिंसिपल अप्लाई किया जा सकता है, और काम किस तरह से और अच्छा और स्पीड में हो सकता है और क्वालिटी वर्क हो सकता है. देन डेवलपिंग मोर सेल्फ अवेयरनेस. आपको अपना और अपने सराउंडिंग के बारे में सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. यू हैव टू डेवलप दैट. एंड देन अगर आपको कोई सपोर्ट देता है या इनकरेज करता है, यू शुड वेलकम दैट. यू शुड नॉट फील दैट समबडी इज़ ट्राइंग टू बॉस ओवर मी, या वो जो आपका माइंड सेट है, इट शुड बी ओपन. आपका माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आपको कोई गाइड कर रहा है, अगर आपको कोई बता भी रहा है कि आपकी ये कमियां हैं या ये खामियां हैं इस काम में, तो उसको पॉजिटिवली लीजिए. क्योंकि हमेशा याद रखना कि जो आपके मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क के जो 2 साल हैं या बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क के 3 साल हैं, उसमें जो आप सीखेंगे, इट विल गो अ लॉन्ग वे इन योर लाइफ. if you are open, if your mind is open to learning, then then sky is the limit. अगर आपके gaps हैं कि नहीं, इसने मुझे ये क्यों बताया, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, या why am I being pointed out, तो मैंने तो ऑब्जर्व भी किया. बिकॉज बहुत सारे मेरे पास जर्नल्स आते हैं, जब वो चेकिंग के लिए आते हैं, रफ में मैं जब चेक करती हूँ, मैं देखती हूँ कि सीधा लिखा होता है कि स्टार्टिंग से कि मतलब जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टेड द वर्क, टुडे आई डिड दिस, इससे मिली, ये काम किया, ये टीम हो रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये हेड है, ये वो है. सो आई फील दैट फर्स्ट और सेकेंड डे पे ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है. So and this is practically not possible. You cannot learn in just 2 days about the whole organization, the whole setup. The organization, it could be a small hospital, it could be a big organization, and learning about the organization, understanding the organization, writing about the organization, how can you just do it in 2 days? So there I tell the students that you have to step by step climb the ladder. ये नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ करो, और आप उसको समझिए, ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बारे में जानिए, उसकी जो जनरल सेटअप है, स्पेसिफिक सेटअप है, एंड सारे को समझने की कोशिश कीजिए, और फिर उसमें काम शुरू करिए. और जिस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हियरिंग इम्पेयर्ड है, विजुअली हैंडीकैप्ड है, अगर कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे रोल ऑफ अ सोशल वर्कर इज़ देयर एंड यू आर अटैच टू अ मेडिकल सोशल वर्क डिपार्टमेंट, तो आप जो डिफरेंट सोशल वर्कर्स हैं उनसे सीखिए, समझिए कि पहले किस किस तरह का काम हुआ है. अगर केस वर्क सेशंस हुए हैं तो आप देखिए, रिकॉर्ड्स पढ़िए कि किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन हुई है, आपकी क्या इनपुट हो सकती है, आप क्या एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में. तो
कुछ भी एक्टिविटीज़ अगर प्लान करनी है, हमेशा ये याद रखना कि जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स हैं और रेगुलेशंस हैं, उसके बीच में ही आप सब कुछ प्लान करिए, ये नहीं कि उससे बाहर निकल के। एंड हमेशा यू शुड बी टेकिंग परमिशंस, आस्किंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन इज़ दिस पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। आप एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं और जो हेड है उसको पता ही नहीं है, तो उससे क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। So you have to plan, you have to understand, then you have to put it into practice that yes, जो आपने सीखा उसको आप किस तरह से प्रैक्टिस में ला सकते हैं ताकि आपका जो स्किल है वो इम्प्रूव हो। आप एज अ सोशल वर्कर किस तरह से आगे काम कर सकते हैं एंड आपके क्या गैप्स हैं उनको किस तरह से भरना है। और हमेशा याद रखना कि जब अगर आप दो सोशल वर्क स्टूडेंट्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, so the skills, the techniques, the principles are not the same. अगर दो स्टूडेंट्स सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट की परसेप्शन, सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया अलग होता है। सो आप दोनों अपना अलग अलग काम करेंगे, कभी भी एक दूसरे का सेम टू सेम काम, सेम टू सेम प्रिंसिपल, सेम टू सेम स्किल, कभी भी वो लिखने की कोशिश मत करिए, वो सेम मत करिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी ग्रोथ ही नहीं होगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि यू एज एन इंडिविजुअल सोशल वर्कर। हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन की सोशल वर्क में, जब हमारे पास डिफरेंट केसेस आते हैं, हम बात करते हैं कि केस वर्क, अगर हम सेशंस ले रहे हैं, केस ए हमारे पास 4 केसेस हैं, तो हम उसमें जो केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, केस 4 है, दे आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे आर नॉट द सेम। सो ऑलवेज रिमेंबर, एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंसान समाज में यूनिक है, उसकी क्वालिटीज़ यूनिक हैं, उसकी सोचने का ढंग यूनिक है, उसकी लाइक्स, डिसलाइक्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, सब कुछ अलग अलग हैं। सो आप उसको एज एन इंडिविजुअल लेके करिए काम, उसके जो उस पे जो प्रिंसिपल्स या उस पे जो स्किल्स अप्लाई होंगे वो दूसरे पे नहीं होंगे, क्योंकि दोनों की सिचुएशन डिफरेंट है। सो सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि मैं किस तरह का काम कर रहा हूँ, क्या मेरी इनपुट होनी चाहिए और किस तरह की मुझे आउटपुट देनी है और कहाँ गैप्स हैं। So this, once you get this in your mind, once you understand this, then how we have to go about our field work, then sky is the limit. आपको कुछ कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, but yes, always keep your field work supervisor in the know-how. Always see that your field work supervisor knows what work you're undertaking, what kind of activities you are doing, and always acknowledge the guidance given by your field work supervisor. कभी एक लाइन होती है, सुपरवाइजरी फीडबैक, एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम सुपरवाइजरी फीडबैक। अगर आप में एबिलिटी ही नहीं है सुपरवाइजरी फीडबैक से सीखने की और समझने की, तो सुपरवाइज़र जो है वो कुछ नहीं कर सकता। सुपरवाइज़र आपको कह रहे हैं कि आपने ये चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन आप वही चीज़ें कर रहे हैं, then there is no way you will be able to learn or you will be able to give your best. सो मेक श्योर दैट आप जो 45 डेज़ करते हैं या आप 30 डेज़ करते हैं, जहाँ पे आपके MSWC का और अब MSW का भी जो है 30 डेज़ का जर्नल भी आपने करना है। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो द राइट पाथ। आप अपने जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो हम बात करते हैं लेटर्स की, टेकिंग द कंसेंट लेटर, टेकिंग द परमिशन लेटर एंड एवरीथिंग एंड गिविंग इट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ एक स्टूडेंट के फ़ायदे के लिए, स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए है, क्योंकि कई बारी जब ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्यूमेंटेशन हो गई, आपका लीगली आप उस पर अटैच हो गए हैं, सो दे विल गिव यू एन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दैट यू हैव डन योर फील्ड वर्क हियर and what is from which date to which date, that kind of authenticates your work, so which will help you when you pass out that yes, you have an experience or a letter which states that you were attached to this organization and you have knowledge about working in this kind of NGO or this kind of organization or this kind of setup institution, so which is helpful to the student itself. So today I end over here with this much of information about orientation visits, concurrent visits, what is expected out of you in an organization, and I will take your session tomorrow about the remaining part, about what is the expectation
of the student from a social work program, then how are you to conduct casework sessions, how are you to conduct group work sessions, and how do you enter a community and how do you work in a community. So thank you so much. I hope आपको आज के सेशन से फ़ायदा होगा, आपको समझ में आया कि आपने फील्ड वर्क कैसे करना है, क्या आपने चीज़ों का ध्यान रखना है. सो ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस.